Okay, so in a case if you are leaving the meeting in between, just remember one thing, that there are still people who are trying to join and they are not able to join. Okay. देखो यहाँ पे लोग ज्वाइन करने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो चाहिए तो मैं रिमूव कर सकता हूँ जो ड्रॉ कर रहे हैं। Allow. Give me a minute. अरे यार, can you please stop drawing it before I screw you? जब डिसेबल करना होता है ना तभी नहीं होता। अब कर लो बेटा, जितना ड्रॉ करना है। हो गया ड्राइंग वगैरह सब आपका? Can we start the session now? Because for the first time I'm seeing these many numbers. Even many PTM students, we have an advanced course, so they are also from the Smat. So they know pretty well that for the first time any Smat batch have joined this number of students. After, like, I've requested in all the batches, but for the first time, so this Smat batch, I am going to remember for the whole life that there was some batch which has joined all the people. Okay, thank you so much for joining this session. Okay, let's start the class, and the topic is risk management. The class is divided into two parts. दो पार्ट में क्लास डिवाइडेड है। पहला टॉपिक हमारा रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। दूसरा टॉपिक उसके बाद हम लोग समझेंगे माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। So so just remember one thing is that do not leave the class, because still you can see that there are people who are trying to join but they are not able to join, ठीक है। तो अगर आप गए तो फिर आपका काम हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट। Now let's understand what is risk first, ठीक है। What do you think? According to you, what is risk? According to you, what is risk? आपके अकॉर्डिंग रिस्क क्या है, बताओ। इश्क नालायक। Uncertainty. Okay, so basically if I have to in simpler words, it is uncertainty. Yes Prashant, he's fine. So रिस्क का मतलब होता है कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, जैसे कि देयर आर डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। जो हर कंट्री में कुछ ना कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं जो प्लान करते हैं, देयर आर एनी काइंड ऑफ फ्लड्स व्हिच माइट कम अप और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दीज पीपल विल बी हेल्पिंग आउट, और या फिर ये लोग प्लान करेंगे, हेल्प करेंगे लोगों का, राइट। सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द रिस्क? स्टॉक मार्केट में क्या है रिस्क? स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है? लॉसेस। Okay, the losses are nothing but the risk. Now how do we manage these losses? हम लोग कैसे इन losses को manage करते हैं उसके बारे में समझते हैं। See, if you will follow risk management, it doesn't matter that कि how good your strategy is, ठीक है। मैटर नहीं करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद you can become a good trader. So if you are following the risk management, you can become a good trader maybe after 1 month, 6 months, 1 year, 2 year or 2 months. It depends on your capability. Okay, so now how do we manage our risk? How do we manage our risk? See, many people start trading, ठीक है, without any kind of knowledge they will start trading, ठीक है, and कुछ नहीं मालूम है and they will start. प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, if they are making profit they will be happy. If they are making losses, then again दिमाग खराब होगा. So if anyone is making losses, obviously the mind will be getting frustrated. Okay, why? Because why do you get frustrated or like irritated?
whenever you face losses, because we are emotionally connected, to money. Nobody gets frustrated, right, when you trade with fake currency or fake account, or let's say fake trading, virtual trading. Nobody get any kind of frustration. अरे ठीक है, लॉस हो गया तो हो गया, कौन सा मेरा पैसा गया, right? Nobody will feel anything if someone is losing money. किसी को अगर कल के दिन मैं बोलूं कि भाई मेरा आज लॉस हुआ है 1 लाख रुपया, किसको फील होगा भाई? चलो हो गया, हाँ भाई कल रिकवर हो जाएगा. How if I'll tell you that one of the student have lost 1 lakh rupees, or let's say he have lost his whole capital, कुछ फर्क पड़ेगा? लगे यार कैसे लॉस हो बस. But you won't be feeling that kind of feel that कि what he is feeling it. आप वो नहीं फील करोगे ना जो वो फील कर रहा है, राइट? क्योंकि उसका पैसा वो कनेक्टेड है, आप उसके पैसे से थोड़ी कनेक्टेड है. ठीक है, तो अपन इमोशनली कनेक्टेड है, इस वजह से सारी जो फियर आती है, ग्रीड आता है, ये सारी चीज आती है. अब इन चीजों को समझते हैं कि कैसे होता है लॉसेस. हाउ डज दिस लॉस हैपन, किस तरीके से लॉस होते हैं. सी, वेरी सिंपल. यू आर बाइंग, लेट्स से एट 1000 रुपीज आप किसी स्टॉक्स को खरीद रहे हो. ठीक है, लेट मी टेक सम नेम. हर्ष, then we have Ritika, then we have Shiva, then we have Ishan. ठीक है, अब सबने 1000 पे बाई किया है and they have sold it, ठीक है, at 990. सबने, everyone have purchased at 1000 rupees and they are selling at 990. Okay, here Harsh has lost, let's say 10,000 rupees. Ritika has lost 20,000 rupees. Shiva has lost 40,000 rupees. Ishan will be like, कि मेरे से क्या दुश्मनी है, that I have lost 1 lakh rupees. Okay, so these people have purchased at 1000 rupees and they have sold in loss. Basically, they have sold at 990. Someone has lost 10,000, someone have lost 20,000, someone have lost 40, and someone have lost 1 lakh. Difference क्या है? Why one person is losing 1000 and other person is losing 20, other person is 40, other is 1 lakh? Number of shares. Everyone agrees कि क्वांटिटी कितना लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है योर प्रॉफिट एंड लॉस. It depends on your quantity, basically number of shares you are buying it. Okay, the losses are dependent on that. अगर जितनी quantity ले हुए उतना ज्यादा profit, उतना ज्यादा loss, right? Remember, so quantity is the main thing. Now quantity matters a lot. ठीक है, quantity बहुत matter करती है इन क्योंकि जब आप trade करते हो, let's say that what I have told you, those who are new, those who are beginner, क्या बोला एक quantity से trade करना. You might not be feeling any kind of fear, but if someone is trading with 10,000 quantity or let's say 1,000 quantity, he will have that kind of fear. उसके पास कुछ ना कुछ डर होगा. ठीक है, he will be getting scared to take up any kind of trade. ठीक है, उसको डर लगेगा. सिंपल सी बात है. Now, अरे यार यहाँ पे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. Allow me a minute, I'll just text that कि I'll send share the recordings. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ. I was not expecting कि इतने लोग ज्वाइन करेंगे. इसी चलते बोल रहा था, बट ज्वाइन ऑन टाइम. Okay, now whatever the quantity we are taking it up, that matters a lot. ठीक है, तो हमें अपनी क्वांटिटी पे कंट्रोल करना होगा, राइट? सो इफ समवन इज टेकिंग 100 क्वांटिटी, उसको उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा. ही विल बी गेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू दैट.
If someone is getting 1000 quantity, he will be getting it according to that. Now, how should we manage our quantity? किस तरीके से हम लोगों को अपना क्वांटिटी खरीदना चाहिए, लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करें ये चीज? बिकॉज इफ वी डिसाइड अ राइट क्वांटिटी, वी कैन टेक अ प्रॉपर लॉस और प्रॉपर प्रॉफिट, राइट? अब लोग क्या करते हैं, लेट्स से दैट कि इफ समवन इज हैविंग 10,000 कैपिटल, ठीक है, दे विल इन्वेस्ट ऑल द अमाउंट इन वन शेयर, ठीक है, वन स्टॉक में they will invest. How many of you have done it in your past, or if you're still doing it? कितने लोगों ने किया? Just type yes if you have done it. Many people have done it. Everyone, those who have started trading it, they have done at least once in their lifetime that they have invested either the full amount of money or the half of it. या तो उन्होंने पूरा अमाउंट ऑफ मनी, पूरा का पूरा पैसा डाल दिया है इसमें, या फिर मतलब कि लेट्स से 80% और 90% ऑफ द मनी हैज बीन इन्वेस्टेड, ठीक है? अब उसमें दिक्कत होती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो बेसिकली वी हैव टू मैनेज आवर क्वांटिटी. नाउ हाउ डू वी डिसाइड आवर क्वांटिटी? अगर हमें क्वांटिटी लेना है तो कितना लेना है ये डिसाइड करना पड़ता है. सी, दिस इज फॉर द इक्विटी स्टॉक्स, ओके? So first thing is that quantity का एक फॉर्मूला होता है, which is risk per trade divided by stop loss, ठीक है? risk per trade divided by stop loss फॉर्मूला होता है. Now risk per trade क्या होता है? What is this risk per trade? ठीक है, रिस्क पर ट्रेड का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं उसमें हम लोग कितना लॉस ले रहे हैं, ठीक है? The losses are always going to be predefined. हम लोग जो भी लॉस लेंगे वो पहले से ही डिसाइडेड होगा. अगर मैं इस ट्रेड में कर रहा हूँ, एसीसी मैंने बाई किया, मेरे को लॉस 100 रुपए, मेरे को लॉस 100 रुपए का होगा, तो वी ऑलवेज टेक, ठीक है, वी विल ऑलवेज टेक 1%, विल ऑलवेज टेक 1% ऑफ आवर कैपिटल. Okay, we'll always take 1% of our capital as risk per trade. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी मेरा कैपिटल है, whatever the capital I am having it, okay, based on that I will be taking only 1%. So for an example, if I am having risk per trade, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया risk per trade. What does it mean that कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं एसीसी में तो मेरे को सिर्फ एक पर, जैसे कि 10,000 का कैपिटल है, उसका 1% मुझे लॉस होगा इसमें. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी 1% रिस्क ऑन 20,000 कैपिटल कितना होगा? 20,000 पे 1% का रिस्क कितना होगा? 20,000 पे 1% का रिस्क कितना होगा? 200 रुपया होगा, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ आई एम ट्रेडिंग इन एनी स्टॉक, लेट्स से अगर मैं एसीसी में बाई करता हूं तो आई एम गोइंग टू लूज ओनली 200, उससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं, ठीक है? आई एम गोइंग टू लूज ओनली 200 रुपीज, ठीक है? वी विल ऑलवेज रिस्क 1% ऑफ आवर टोटल कैपिटल एज रिस्क पर ट्रेड, ठीक है? तो 1% रिस्क, लेट्स टेक एन स्टैंडर्ड कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज. अगर 10,000 का कैपिटल है हमारा तो 100 रुपए का रिस्क हमारा बनता है हर ट्रेड पे, ठीक है? 100 रुपए का रिस्क बनेगा हमारा हर एक ट्रेड पे, ठीक है? नाउ हमारा लॉस डिसाइड है. लेट्स से टेक अप एन स्टॉक एसीसी, यू आर बाइंग एट 2,000 रुपीज, ठीक है? एंड आपने एसएल डिसाइड किया है, लाइक स्टॉप लॉस, ओके, is at 1990 where basically you are going to exit in loss. जहां पे आप जो लॉस में जो एग्जिट करोगे वो आपने डिसाइड किया कि भाई 1990 पे मैं एग्जिट करूंगा. अब ये ट्रेड आपका बन रहा है, प्रॉपर एक ट्रेड बन रहा है. इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैं बाई करने वाला हूं 2,000 पे, और मैं अगर इनकेस मेरे फेवर में नहीं जाता तो मेरे को 1990 रुपए पे निकलना पड़ेगा. I am going to buy this stock at 2,000 rupees. In a case if it is not going in our favor, I will be exiting at 99. But I have already decided that I am going to lose only 100 rupees in this.
मैंने ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को अगर लॉस होगा इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, कितनी क्वांटिटी बाई करो। इफ आई एम बाइंग 1 क्वांटिटी, मेरे को लॉस कितना होगा 10। तो हाउ मेनी क्वांटिटी आई शुड बाई दैट कि माई लॉसेस विल बी ओनली 100। टेन विल बी द क्वांटिटी, राइट। आपको समझाता हूं मैं। ओके, नाउ लेट्स से दैट कि अगर मैं एक क्वांटिटी बाई करता हूं, इफ यू आर बाइंग 1 क्वांटिटी, ओके, देन इन दैट सिचुएशन माय लॉस, मैंने बाई किया 2000 पे, ठीक है, और मैं सेल कर रहा हूं 1990 पे, तो एक क्वांटिटी पे मेरे को 10 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। इफ यू आर बाइंग 2 क्वांटिटी देन 20 लॉस, 5 क्वांटिटी देन 50 का लॉस होगा, 10 क्वांटिटी बाई करोगे तो देन जाकर 100 का लॉस। तो हाउ मेनी क्वांटिटी यू विल बाई, 10 क्वांटिटी, ठीक है। अब ये कैसे निकला, हाउ डिड वी डिसाइड दैट कि वी आर गोइंग टू टेक ओनली 10 क्वांटिटी, हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया ये सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी ही लेंगे हम, हाउ, क्या आपने तो बेसिकली लॉजिक यूज के लिए, भाई एक पे 10 मिल रहा है तो 10 पे 100 हो जाएगा, राइट। सो कैन वी पुट दिस इनटू अ फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्वांटिटी का, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। रिस्क पर ट्रेड कितना है हमारा, पर ट्रेड व्हाट इज द रिस्क, प्लीज टेल मी। पर ट्रेड हम लोग कितना रिस्क ले रहे हैं, पर ट्रेड 100 रुपीज रिस्क ना, 10,000 इज द स्टैंडर्ड कैपिटल, तो हमें कितना रिस्क मिल रहा है, 100 रुपए का। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, 10। आंसर क्या आएगा, 10, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल बी टेकिंग अप द क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, आप आंसर करना, कैपिटल इज 20,000 फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, यू आर बाइंग एट 1,000, ठीक है, एंड एसएल है आपका 995 पे, ठीक है, एसएल इज एट 995, व्हाट विल बी द क्वांटिटी, ठीक है, एंड कैपिटल इज 1,000, दैट मींस रिस्क जो होगा वो होगा आपका 1%, ओके। कितनी क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे, कितनी क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Someone is saying 40, majority of you are saying 40, some people in between are saying 20 as well as 50। मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सुन लो मेरी बात। कैपिटल है हमारा 20,000 रुपए, रिस्क हम लोग ले रहे हैं 1% 20,000 पे, 1% 20,000 पे कितना होता है वो आप डिसाइड कर लो। हम लोग बाई कर रहे हैं किसी स्टॉक को 1,000 पे, सेल कर रहे हैं उसको 995 पे, ठीक है। I'm having a capital of 20,000, risk is 1%, I'm buying at 1,000, SL is 995, what will be my quantity size? तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ठीक है। तो व्हाट इज माय रिस्क हियर, 200 रुपीज इज द रिस्क, 200 रुपया मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, 200 रुपया मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। नाउ एसएल कितना मेरा हो रहा है, व्हाट इज माय एसएल, 5 रुपीज, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 40 होगा। अंडरस्टूड, किस तरीके से आपको क्वांटिटी खरीदना है, एवरीवन, इज इट क्लियर? आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, चलो लाइव में लेते हैं एग्जांपल, लाइव एज इन की चार्ट्स पे देख लेते हैं। अब जो छोड़ के गए हैं बीच में, अब उनको क्या ही बोलूं मैं, एक तो दूसरे का जगह खा लिया और निकल भी गया।
चलो फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग प्लान करते हैं, एक बाइंग सेलिंग कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। ओके इसमें बस सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, क्या है कैसे है, कहाँ पे हम लोग बाई कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इट, ईच एंड एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम योर एंड एंड टेल मी कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। आप मान के चलो बाई कर रहे हो यहाँ पे, एंड इसमें कुछ ज्यादा ही मूवमेंट देगी आज। ओके फॉर एन एग्जाम्पल, नौकरी यहाँ पे हम लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड माई एस एल इज कमिंग अराउंड, लेट्स से कीप इट एज 20 रुपीज, ठीक है। सो यू कैन सी एट दिस साइड, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द प्राइस 3808 पे आप बाई कर रहे हैं हम, एंड 3786 इज माई स्टॉप, ठीक है। 3786 is coming around my stop loss, and we are actually sorry, we are buying at 3808, ठीक है। मेरा कैपिटल है राइट नाउ लेट्स से 1 लाख, my capital is 1 lakh, okay। मेरा कैपिटल है 1 लाख। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द क्वांटिटी आई एम गोइंग टू बाई। आई एम बाइंग एट 3806, मैं बाई कर रहा हूं 3806 पे, मेरा एसएल है 3786 पे। कितनी क्वांटिटी मैं बाई करूंगा यहाँ पे, लेट मी नो। ओके लिसन टू मी, मैं वापस से लास्ट टाइम आई विल रिपीट दिस थिंग, ठीक है। 1 lakh is the capital, which means that 1% is risk, correct। 1 लाख का 1% कितना होगा, 1000। ये क्लियर है। 1 लाख का 1% कितना होगा, 1000। ये क्लियर है ना सबको, कि इसमें भी मेरे को समझाना पड़ेगा अब, ठीक है। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। 1000 इज माय रिस्क, एसएल कितना बन रहा है 3806 माइनस 3786, मतलब 20 पॉइंट्स। तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, व्हाट विल बी द क्वांटिटी आई एम गोइंग टू गेट, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 50। समझ में आ गया, हाउ आर यू गोइंग टू बाय द क्वांटिटी। क्लियर है ना। अरे 1000 में कैसे लेगा वो समझा दूंगा मैं सारी चीज, ये क्वांटिटी कैसे लेना है वो समझ में आ गया ना सबको। चलो अब देखो, इफ यू आर प्री डिफाइनिंग योर लॉसेस, अब मान के चल लो कि हम लोग अब थोड़ा माइंडसेट की यहाँ पे थोड़ी सी बातें करें। अब लगता है कि चलो कुछ रूल्स है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट रूल इज ऑब्वियसली यू हैव टू टेक, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। आपको जो रिस्क लेना है वो 1% का लेना है, ठीक है, on your capital. You have to take risk of 1% on your capital per trade. Risk of 1% per trade, ठीक है, on your capital, ठीक है। पहला चीज मतलब जितनी भी, अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो तो एक में आपको 100 का लॉस होना चाहिए, दूसरे में 100 का लॉस। दूसरा आपका पॉइंट है मैक्सिमम ट्रेड, दिस इज फॉर द इक्विटी मार्केट। मैक्सिमम ट्रेड जो आप लोगे वो 3 होगा, 3 trades will be the maximum, ठीक है। थर्ड पॉइंट, in case if you are trading, अगर आप ट्रेड कर रहे हो and you have been losing money continuously, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना आपको लॉसेस हो रहे हैं 3 दिन से, तो क्या करना है, टेक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 days। अब देखो ये पॉइंट समझना,
अब सब लोगों ने, जितने लोगों ने लॉसेस किए हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे, ठीक है। दोज हु हैव लॉस्ट मनी दे विल बी एबल टू रिलेट। सो लेट्स से दैट कि टुडे यू आर लूजिंग 1000, टुमारो यू लॉस्ट 2000 और डे आफ्टर टुमारो यू हैव लॉस्ट 3000। सो टोटल आपका लॉस हो गया 3 दिन में 6000। आपका मन नहीं करेगा यार ये वीक 2 दिन का है, वोंट यू फील दैट कि टू रिकवर दोज लॉसेस, यू विल फील राइट। कल ट्रेड करोगे तो द माइंड विल बी टू रिकवर द लॉसेस। If you're trading tomorrow, the mind will be like, boss, let's recover those money which I have lost it, right? And what happens on the 4th day? A big loss, right? A big loss. इस वजह से I always tell that people that if you are losing money, let's say कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं 2 दिन, like I was trading with the friends for Monday, Tuesday, Wednesday, ट्रेड कर रहे हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या फिर टारगेट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ नहीं हो रहा, तो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। सिंपल थिंग, आई टोल्ड देम कि आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर नेक्स्ट 2-3 days। सिंपल, टेक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 days। सो व्हाट विल हैपन इन दीज 1 or 2 days? ठीक है, क्या होता है, क्यों चाहिए? एक तो एक रिमूव योर माइंड फ्रॉम रिकवरिंग द मनी, ये दिमाग से हटा दो कि पैसे बनाने, ये सब चीजों से निकाल देना। पहला चीज ये करना है। दूसरा चीज, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट recovering the money and all. Take a normal, live a normal life, go meet your friends, try to get the positive vibes. After that, once you are back to the work, analyze it, what are you doing wrong? क्या आप गलत कर, कौन सी चीज गलत जा रही जिसकी वजह से लॉस हो रहा, फिगर आउट दैट एंड डू नॉट रिपीट। ओके, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लॉसेस हो रहे होंगे, सो फाइंड आउट दैट एंड यू शुड नॉट बी रिपीटिंग इट, ठीक है। नाउ let's say you have lost money in 2 trades, ठीक है। for an example, आपने you have taken 2 trades and you have lost money, 2 ट्रेड हुआ, आपने पैसे गवा दिए, maybe it is let's say ACC or Bata India में you have lost 100 rupees। you should close your laptop, you should close your laptop। तीसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। you should not be taking any other trade, ठीक है। मैं आपको आज का चार्ट अपना दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट रिमाइंड मी एट द एंड, ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड टुडे। सो लेट्स से दैट यू हैव लॉस्ट मनी इन 2 trades, व्हाटएवर द मनी यू हैव लॉस्ट, you should close your laptop and you should not be taking any other trade। इसमें क्या होता है आप समझ लो, you would have faced 2 ट्रेड में लॉस हो गया, दिमाग आएगा 11 ही बजा है, 12 बजा होगा। Let's say that ki it is right till the time you have lost in 2 trades, it will be around 11 o'clock or 12 o'clock। What will you think कि बॉस अभी तो 3 बजे तक का टाइम है, ट्रेड तो बनेगा, let's take up another trade। Now that trade is not going to be a normal trade, that trade will be to recover the losses। वो वही ट्रेड लोगे जिसमें आप रिकवरी के लिए सोचो, and there you are going to lose more। So you should not be taking any other trade if you have lost in 2 trades, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, मान के चलो कि आपका 2 ट्रेड में लॉस हो गया, बट एक ट्रेड आपने पहले ही ले चुका, मींस फॉर 3 ट्रेड्स इट इज स्टिल रनिंग, जिसमें 2 लॉस हो गया, तो आप तीनों ट्रेड में लॉस बुक करो एंड दैट्स इट। सो मैक्सिमम लॉस शुड बी हैपनिंग इज 3%, दैट्स इट। 3% of your 3% of your capital, 3% of your capital should be the maximum loss, ठीक है। अगर हम लोग ये इक्विटी की बात कर रहे हो, ऑप्शंस में अलग गेम होता है, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, कैश मार्केट, बेसिकली इक्विटी मार्केट, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फॉर दोज ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग टू बिकम अ मिलियनर और बिलियनर और वांट टू बाय अ फरारी और व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि you should take a break, especially for beginners, if you are making profit continuously for 3 days। देखो इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी, और बहुत जरूरी पॉइंट है हिंदी में और इंग्लिश में, आई रिपीट इन बोथ। सो हिंदी में बोलता हूँ पहले, दैट किसी होता क्या है ना कि कोई भी नया बंदा आया, सीखा है नहीं सीखा वो फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रेड करता है,
प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एक दिन हुआ 1000, दूसरे दिन 2000, अगले दिन 3000। अब उसके दिमाग में क्या आया कि भाई कल तो मैं और बनाऊंगा, मैं मार्केट को समझ गया हूं, वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, बोलते हैं ना हिंदी में कि आसमान में उड़ने लगेगा। ठीक है, वही चीज होगा। अगले दिन क्या होगा, जो प्रॉफिट बनाया था वो भी जाएगा, ठीक है, वट एवर जो भी प्रॉफिट था वो चला जाएगा, एंड देन लॉस होगा। ठीक है, तो माइंडसेट का गेम है। लोग सोचते हैं कि 10,000 के कैपिटल से कभी कभी बन जाता है, मान के चलो लोग बिगिनर हैं, बना लेते हैं, ऑप्शन में करते हैं, 5,000 बन गया। फैक्ट बात बताता हूँ एक आपको, ठीक है, दैट की रीसेंट केस, एक बंदा था पिछले स्मैट का, आई डोंट नो व्हिच स्मैट बैच ही वाज इन, ठीक है। सो व्हाट ही डिड दैट कि he was might be around 17 or 18 year old only. He was telling that ki, how are you guys trading, you're not making 50% return in a day, what are you doing in stock market, what are you doing in the stock market if you're not making 50% return in a day? ठीक है, तो उसके किस्सा क्या था कि बेचारे ने 5,000 रुपए लगाए थे, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपायरी, ऑप्शंस के बारे में आपको दिखाया था ना मैंने। सो 100 रुपीज कैन गो टू 200 रुपीज, राइट। तो लकीली उसका प्रॉफिट हो गया 5,000 का 10,000, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि मैंने 5,000 का 10,000 बना लिया, आई मेड फ्रॉम 5,000 to 10,000 रुपीज। ही वेंट ऑन लाइक कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। उसके बाद तो क्या हुआ वो नहीं मालूम, ठीक है। ऑब्वियसली द रिजल्ट एवरीवन इज वेल अवेयर कि क्या हुआ होगा ऐसे सिचुएशन में, ओके। So whenever you are making profit continuously for 3 days, either you take a break for a day, or you can reduce your risk. Basically, you can reduce your capital. Or else what will happen that you will unnecessarily start thinking that you know each and everything about the market. If someone asks me that, do you know this? I don't know. If I do not know, I'll tell them, okay, no, I don't know. What is that? I'll be curious to learn about it. What is that concept? Right? So always remember, you are not going to be a king of the market. It is a continuous learning. जैसे कि डॉक्टर्स में क्या होता है ना कि उनको कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, ठीक है, सर्जन हो गया फिर कोई भी चीज हो गई, राइट। सिमिलर इन द ट्रेडिंग फील्ड ऑल्सो, एवरी डे यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम द मार्केट, ओके। तो यू शुड टेक अ ब्रेक इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉर 3 days। व्हाई? द आंसर द पीपल विल गिव। How many of you have faced this कि आपने you have traded for some days, you made good profit and you thought कि भाई अब तो मैं अच्छा करूंगा, and next day you have lost a big amount of, just type me, आंसर मिल गया everyone? So this happens कि भाई बहुत गंदा लॉस होता है, राइट। तो अगर आपके दिमाग में वो बोलते हैं ना कि जैसे ही आपके दिमाग में चढ़ गया कि मैं तो सब जानता हूं, as soon as you will fix in your mind that you know each and everything and no one is greater than you, what this person is teaching is completely bullshit, I can make 5,000 rupees from 10,000 capital, fine, make it. You'll sooner realize within 1 week that you will not be having 5,000, leave about the profit, you will not be having capital also, आपके पास कैपिटल भी नहीं रहेगा, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, वो सीन हो जाएगा भाई। तो हमेशा याद रखना, यू शुड ऑलवेज टेक अ ब्रेक if you're making profit continuously for 3 days. For an example, exactly same thing goes to the losses, that okay, I've already spoken about the losses. Sixth point is, close your laptop, close your laptop if you have made good profit. ठीक है, मतलब कि you have taken 2-3 trades, you have made good profit, let's say 4-5% is return you have made it. उसके बाद 10-11 बजे तक बन गया, मार्केट खुला है 3:30 तक। सो पीपल थिंक दैट कि आई कैन डू मोर ट्रेड, आई कैन मेक मोर मनी। सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों में, और चाहिए और चाहिए, राइट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, वी डू ओवर ट्रेड आउट ऑफ ग्रीड। तो जो पैसा बना है वो भी चला जाता है। तो इसका सिंपल सा किस्सा आपको मैं बताता हूं, ठीक है, बहुतों के साथ हुआ होगा। एंड अगेन,
this is a general story because this has happened with me also. ठीक है, there is nothing like that कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं कोई महान ऐसा तो हुआ नहीं है कि मैंने एकदम perfectly start किया था. So what happens that कि let's for an example कि आपने 1000 rupees का profit बना लिया, ठीक है. अब लगे यार कि 12 बजा है ना, 11-12 बज गए, like it's still 11 o'clock 12 o'clock and you have made like 1000 profit. Okay, you want to make more, you are half time, let's take another trade. You made 800 rupees profit. Now total profit is 1800. Who doesn't like the round figure? Yeah, 2000 is a milestone. Who has told that 2000 is a milestone? Who has told that 1 lakh is a milestone, not 99,000 is a milestone? Who? Nobody has told ना. किसी ने बोला है क्या? आपने कहीं सुना है कि 1 lakh is a milestone और 10 lakh is a milestone? Nobody has told. अपने लोगों ने बना रखे हैं, खुद ही लोगों ने समझ लिया भाई 1000 प्रॉफिट हो तो एक माइलस्टोन है, हमने अपने दिमाग में रखा है. Nobody has told that the trade here means buying two different stocks. Trade here means one buying one stock and selling the same stock and booking the profit. मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है. तो nobody has told. Now 1800 profit हो गया. Next thinking, let's take it to 2000. अगली बार क्या सोचोगे आप? मतलब अब क्या सोचोगे? 2000 लोगे. You took up the fourth trade, let's say, another trade. First loss 1500. अब आपका कितना हो गया प्रॉफिट? 1300 हो गया. You'll be like, let's wait more. Now it is 1000. अब क्या सोचोगे कि भाई कम से कम let's come back to 1800. I'll be fine. मेरे को कुछ नहीं चाहिए. I don't want to make it to 2000. ठीक है, but the fact is कि once it is reaching to 1800 now, you will wait once again to go back to to take it to 2000. That fact is that is the fact. I have felt it from my end as well, and you would have felt from your end. ठीक है. Again, if it goes to minus 500 profit, you will be like कि बस 1000 तक भी चला जाए. If it goes to 1000 also, I'm happy. It comes to zero. No loss, no profit. Whatever the profit you have made, it's gone. What you will be doing? अब क्या करोगे आप? Again आएगा immediately कि यार ये कम से कम let's, if it goes to 1000 also, I'll be, I don't want anything, just 1000. Now another trade maybe. It will give you another 500 loss or maybe 1000 loss. अब लगे यार कम से कम if it goes back to zero, I'll be fine. You took up another trade. That gave you another 2000 loss. You'll be like, at least 1000 wala loss was much better. 1000 loss was much better than this 2000 or 3000 loss. Right? How many of you have faced this? कि जितना मिला उसमें खुश नहीं थे, जब लॉस होने लगा तो और बस ये कर करके you have taken more losses. हुआ है ना? हाँ जी हुआ है. क्यों होता है? Because of emotions. Because of emotions, nothing else. Or because of our need. ठीक है? We face these things. ठीक है? अब बहुत लोग इसको मजाक में लेते हैं, but ask those people who do not have any other income source and they just want to trade. They just want to make their career into that. They will be having a regret. Why did they do? क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो हम बहुत रिग्रेट करेंगे. ठीक है, इसके बारे में हम लोग और समझेंगे. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बिफोर आई क्लोज बिफोर आई डिलीट दिस. ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं. ये था हमारे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स का. नाउ विल टॉक अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? बेसिकली if you are risking 100 rupees per trade, ठीक है, if you are risking 100 rupees per trade, how much profit you want? कितना profit चाहिए? That is the profit part is called as reward. So let's say that if you are risking 100 rupees and you are getting 100 rupees as reward, what is this ratio? 1:1. If you are risking 100 rupees and you are getting 200 rupees, what is this reward? 1:2. If you are risking 50 rupees and you are getting 150 rupees, what is this reward? Please tell me.
ये क्या रेशियो बनेगा इसका? अगर आपने 50 रुपया रिस्क लिया और 150 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है तो 1:3 का आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स से दैट यू आर रिस्किंग 100 एंड यू आर गेटिंग 170 प्रॉफिट। कितना का रेशियो बन रहा है? व्हाट इज द रेशियो ओवर हियर? आप रिस्क कर रहे हो 100 रुपए का एंड आपको 170 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। क्या रिवॉर्ड है? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा? 1:1.7। सही है? क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल व्हाटएवर आई हैव टॉट? परफेक्ट। अब समझते हैं इस चीज को। What is the ideal risk reward ratio? The ideal risk reward ratio is RRR is 1:2. ठीक है, but you can go for trade. You can go for trade जहां पे आपको 1:1.6 भी मिल रहा है। मतलब 100 रुपया रिस्क कर रहे हो आपको और 160 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड टू गो। ठीक है, बेसिकली अब हम लोग यहां से कुछ चीजें समझेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई एम येट टू टीच राइट नाउ। ठीक है, तो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी, यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर एनी ट्रेड। अब देखो, फॉर एन एग्जांपल, मिनिमम 1:1.6। ठीक है, द मिनिमम जो हम लोग लेंगे प्रॉफिट होगा वो 160 रुपया होगा 100 रुपए के रिस्क पे। कैन यू प्लीज टेल मी, हियर देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिटन, कैन वी गो फॉर दिस ट्रेड? यस और नो? क्या हम लोग इस ट्रेड के लिए जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे कैसे चले जाएंगे भाई? हाउ विल वी गो? देयर इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1.16, विच मीन्स 100 रुपया पे सिर्फ 116 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। If the risk reward ratio is 1:2, can you go for it? Yes or no? अब जा सकते हो? Yes, we can go for this particular trade. ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आई टीच यू हाउ टू ड्रॉ दिस लॉन्ग ग्रीन एंड रेड बॉक्स का, टेंशन मत लो। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द प्रोबेबिलिटी। सी, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ट्रेडिंग द प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, just to make it clear regarding the quantity and the risk percentage, it is inclusive of the leverage which we get. Okay, if you are trading with 10,000 capital, you know that you get 5 times leverage, which means that you can trade up to 50,000 rupees. This 1% risk on your capital is inclusive of all that. Okay, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 10,000 की कैपिटल पे रिस्क लेते हो 1% का, ठीक है, तो ये आपके इंक्लूसिव है वो सारे जो लिवरेज हमें मिलते हैं, जो 20% हमें पे करना है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ दैट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट कैपिटल 1000। ठीक है, विल टेक अ स्टैंडर्ड, अगर लॉस होगा तो 100। इफ वी आर मेकिंग प्रॉफिट देन इट इज गोइंग टू बी 200। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनेगी? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सारे 3 ट्रेड मैक्सिमम फॉर द डे। ठीक है, यू मेड अ प्रॉफिट, यू मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 200 प्लस 200 प्लस 200। वेरी गुड डे। लोग मरते हैं इस दिन के लिए। 600 का आपको प्रॉफिट होगा, यू विल बी मेकिंग अ 600 रुपीज प्रॉफिट। सेकेंड, you made a profit in 2 trades and you lost in 1 trade. तो क्या होगा? 200 plus 200 minus 100. Then it is going to be 300 profit. Then third one, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, then another trade you have lost it. 2 ट्रेड में लॉस and 1 ट्रेड में प्रॉफिट. Then it is going to be 0, means no loss, no profit. Last one is the worst day, जो कोई नहीं देखना चाहता है। 3 trades,
लॉस -100 -100 -100, so it is going to be 300 का लॉस. Now tell me, do you think so कि if you are following risk management and let's say in the worst situation, if you're losing 300 rupees, is it fine? Is it fine if you're losing 300 rupees in a single day by following the risk management? No way. Hey, bhai, this is the best way. If you're trading in stock market, maximum amount of money which you should be losing is 300 only, not more than that. 3% of your capital. If maximum, we should be decreasing it to 2%, 3%, but 300 is something which 3% is something which we expect. And I'm talking about a smaller capital up to 10 lakh rupees. 3% loss is a minimal loss. Okay. Now, if we are following risk management, अगर हम लोग risk management follow करते हैं, ठीक है, what do we get? हमें क्या result मिल सकता है? If you are following risk management, चलेगा ना? 300 रुपए का आज लॉस हो रहा है. If you are making a profit of 600 rupees tomorrow, it's fine, right? If you are following risk management, okay, what will be the situation? क्या situation मिल सकती है हमें? ठीक है. First is your the first situation can be small profit. Basically 300 का जो profit होगा, that can be your first situation, small profit. Then another one, break even. Break even means no loss, no profit. Break even means no loss, no profit. ठीक है. The other one will be small loss. Basically 300 is considered as small loss. ठीक है. Then fourth one is your big profit, which everyone loves. Okay, big profit. Now big profit is basically the 600 one, or more than that also you can get. Break even is 0. Small profit is basically minus 300. Small profit is that 300. Small loss is minus 300. Now, अगर ये सारी चीजें हो रही है मार्केट में, if someone is following the risk management, do you think so that कि वो मार्केट में टिक पाएगा? Like he will be there in the market for a longer period of time if he is following this? Simple thing. But what happens to people because of that? They have to get out from the market, which is the fifth probability which will make you to leave a stock market. कौन सा ऐसी probability होती है जिसमें stock market को छोड़ना पड़ता है? Big loss. The big loss will make you leave the stock market. Remember this. Big loss will make you leave the stock market. देखो, अगर छोटा लॉस हो रहा है 10,000 में से 200 चला गया, मान के चल लो 400 300 चला गया, 500 चला गया कभी कभी गलती से, ठीक है, स्टिल इट इज फाइन, यू कैन स्टिल रिकवर. क्योंकि माइंडसेट आप सोचेंगे 3% ही तो लॉस है. यस्टरडे आई वाज एबल टू मेक 5% प्रॉफिट, आज मेरा 3% चला गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर देख लेंगे, कल भी गया, ठीक है, परसों देखेंगे, परसों भी 3% का लॉस हो गया, तब जाकर 3 दिन में यू हैव लॉस्ट 3%. सो 10,000 कैपिटल से 3 दिन में 1,000 का लॉस. So there might be something wrong, कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा. अब उनको एनालाइज करेंगे. We will analyze that and will take good trades from Monday. और 2 दिन में फिर से पैसे रिकवर हो जाएंगे. गेम इज सिंपल. आप अगर ये को फॉलो करोगे ना, that कि you should be taking only the predefined losses, you will be always there in the market. अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया कि भाई मार्केट और भी दिन है,
जैसे कि ये नहीं तो कल के दिन देख लेंगे, आज नहीं तो कल होता है, बोलते हो ना, इफ नॉट शी देन मे बी अदर वन, राइट, अगर ये नहीं तो कोई और। वैसे ही यहाँ पे भी ये दिन आपका नहीं था तो कल किसी और दिन आपका होगा, मार्केट 10 साल बाद भी रहेगा, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर योर कैपिटल मे नॉट बी विथ यू फॉर एवर, बट द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी फॉर एवर। हो सकता है कि आपका कैपिटल आपके साथ ना हो, एक साल के बाद आपके पास कैपिटल ना हो, बट पॉसिबिलिटी ये तो पॉसिबल है ना कि मार्केट तो रहेगा। तो पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट का ये भी कि सेव योर कैपिटल। फर्स्ट थिंग इज दैट कि सेव योर कैपिटल, योर कैपिटल। रिमेंबर दिस, जिस दिन आपने अपने पैसे बचाने के बारे में सोचना स्टार्ट किया, थिंग्स विल बी डिफरेंट। कैपिटल बचाना है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा चलेगा, लॉस हो रहा है ठीक है, इफ आई एम एबल टू सेव माई कैपिटल आई कैन ट्रेड वंस अगेन। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे करोगे? इफ यू आर नॉट हैविंग मनी हाउ विल यू ट्रेड? प्रॉब्लम इज many people realize their mistake after doing it. Even they know they were wrong, but still they will take more losses. क्यों? बिकॉज दे आर स्टबर्न, क्योंकि वो जिद्दी है, उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है। अरे बाप का है क्या स्टॉक मार्केट, कि आपके बोलने से रिलायंस किसका है? कोई रिलेशन में आते हैं क्या मुकेश अंबानी? इफ यू आर ट्रेडिंग इन रिलायंस एंड इफ इट इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, व्हाई इट इज गोइंग टू गो इन योर फेवर? मुकेश अंबानी को बोले थे कि भाई मैं तुम्हारा स्टॉक बाई कर रहा हूं, यू शुड बी गोइंग अप, नो राइट? देन we cannot control the market movement, just understand that. The hope will kill you in the market if the hope is on the loss side. अगर होप करोगे कि भाई 3000 का लॉस है, मैं होप कर रहा हूं मार्केट ऊपर आ जाए, होप, अरे किस बेसिस पे होप कर रहे हो? ऐसा हुआ होगा, I'll ask you also, you are in loss, भाई भगवान से जाकर प्रार्थना की दैट कि बस लास्ट टाइम आज, इसके बाद कभी गलती नहीं करूंगा, and I'm pretty much sure that out of 10 times at least God would have also helped you 2 to 3 times. 2 से 3 बार या 4 बार भगवान भी बोला चल भाई ठीक है आज तेरा हो गया, कल से मत करियो। You prayed and you were out from that particular loss. हुआ है ना? सुधरे? Did you stop doing that mistake? Did you stop doing that mistake? No, right? You started doing it, अगला दिन same mistake. I'll teach you sanskar. Okay, so this is the point. Now over here we know a strategy. Let's say I'll be teaching you a strategy which will give you, let's say, 2% return in a trade. 2% मतलब कि 10,000 डालोगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है? Now let's understand कि what if we are not following the risk management. बहुत लोगों को हमने जब स्टार्ट किया तो how did I start? मैंने कैसे स्टार्ट किया था कि पहले आ गया, so let's say that कि 10,000 कैपिटल है, 10,000 is my capital. I used to invest all those in ACC. ठीक है? You would have also done it by the way. ACC में आपने इन्वेस्ट कर दिया. You invested in this, right now it is going in loss. एक और ट्रेड मिला, किसका मिला? टाटा मोटर्स का। फॉर एन एग्जाम्पल ये लॉस में जा रहा है टाटा मोटर्स, यू आर प्रीटी मच श्योर कि यार दिस ट्रेड विल गो राइट, ये मेरे को ले लेना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन, एग्जिट एसीसी एंड बाय टाटा मोटर्स। पहला ऑप्शन ये है आपके पास। अदर ऑप्शन विच यू हैव इज होल्ड एसीसी एंड वॉच टाटा मोटर्स। दूसरा ऑप्शन ये है। अब चाहे आप जो भी कर लो, whatever you do, it doesn't matter. अब होना क्या है, if you are holding ACC, अगर आप ACC होल्ड करते हो तो this one will give you loss and Tata Motors will give you profit.
if you're exiting ACC and if you're buying Tata Motors, then ACC will turn out to be profit and Tata Motors will go in loss. Anyone over here who have faced this? हुआ ऐसा? यार एक ट्रेड से निकल के दूसरे ट्रेड में गए, दूसरा वाला प्रॉफिट लॉस में चला गया, जो मैं था वही प्रॉफिट में चला गया. होता है. Everyone have faced this. Now you will be wondering that why this happens, right? Why? What is the reason behind it? As soon as I buy, the market goes against my direction. As soon as I sell, market goes up. से क्यों होता है? इसका आंसर सिंपल सा है कि you are taking a trade at wrong time. आप गलत टाइम पे ट्रेड ले रहे हो. इसका आंसर बड़ा सिंपल है. Okay. Now let's say that if you would have been trading with risk management, आपके पास 10,000 कैपिटल है, you have 1% risk का thing, okay. At one point of time you can trade in at least 3 stocks. So let's say if you have taken one trade Tata Motors, if it is going in loss, stop loss hit नहीं हुआ, you got another entry ACC, you can still go for it. आपके पास कैश पैसे बचेंगे. You will be having sufficient amount of money. Let's see how. So I'll show you 1 minute. For an example, let's say sure. Let's say that we are having capital 10,000, right? Risk capital, ठीक है, हमारा ये कैपिटल है. 1% basically 100 rupees का रिस्क है हमारा. Now stock 1 basically AB. AB is the first stock. CD, EF, 3 stock है. So generally what happens? Let's say that we are buying it at buy SL amount. ठीक है. Now we are buying it at 1,000 rupees. ठीक है. 1,000. SL कितना है हमारा? 995 for an example. ठीक है. क्वांटिटी कितना ले? 100 डिवाइडेड बाय जो भी आएगा, this will be my quantity size, right? Amount required to buy this particular trade. कितना चाहिए पैसा? 20 क्वांटिटी. ठीक है, पहला है, निकाल लो इसका 20% आपको पे करना होता है. ठीक है. देन मल्टीप्लाइड बाय फॉर वन स्टॉक. एक स्टॉक के लिए आप कितना पे करने वाले हो? एक स्टॉक के लिए वी पे ओनली 20% ऑफ इट. द स्टॉक प्राइस इज 1,000. तो आपने कितना पे कर दिया? 200 रुपया. टोटल क्वांटिटी विच यू हैव इज 20. कितना आपने पे किया? 4,000 रुपीज, राइट? मान के चलो अगेन यू आर गोइंग फॉर अनदर स्टॉक 2,000. चल आपने रखा है 1985 का. कितनी क्वांटिटी बाय करोगे? हाउ मेनी क्वांटिटी विल यू बाय? अराउंड 6.66 आ रहा है. इसमें कितना पैसा जाएगा मेरा? अराउंड 2,600 के आसपास जाएगा. लेट्स से अनदर क्वांटिटी 400 पे अपन ने बाय किया एंड वी आर हैविंग एन स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से 397.5 पे रखते हैं फॉर एन एग्जांपल. देन इसमें कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 40 क्वांटिटी. समवेयर अराउंड 40 क्वांटिटी यू विल बी बाइंग इट. इसको पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए? If you want to buy, how much you have to pay? Somewhere around 3,200. Now add this one. Total capital आपका कितना था? अभी भी कितना ही बचा हुआ है? पूरा कैपिटल यूज हो गया
the whole capital was utilized over here in this trade, right? तो आप एक चीज समझ लो कि आपका जो 10,000 है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो आराम से 2 से 3 स्टॉक आराम से आप उठा सकते हो, ठीक है? सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, आई विल रिपीट वन थिंग, दिस इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक, दिस इज द एसएल, एंड बेस्ड ऑन एसएल हाउ मेनी क्वांटिटी वी कैन बाय। प्राइस यहाँ पे है, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी कितनी है, और ये इंट्राडे के लिए मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, how much I have to pay for intraday trade, and the amount is written over. Clear? Is this clear? अमाउंट का फॉर्मूला कुछ नहीं है। अमाउंट एक स्टॉक का 20% आप पे करते हो ना, उसी के अकॉर्डिंग है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, आपको आइडिया लग जाएगा दैट कि हाउ इट इज। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि जो ये पार्ट रहने देता हूं मैं। अब आपको नॉर्मल कुछ चीजें आपको समझाता हूं। लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, कि व्हाट इज द बेस्ट एक्यूरेसी यू कैन हैव। लेट्स कंसीडर दैट कि लॉस होगा तो वी विल लूज, अगर इन अ डे अगर मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी है, इफ आई एम लूजिंग लेट्स से 200 रुपीज और 250 रुपीज, ठीक है, 250 का लॉस है, प्रॉफिट हो रहा है मेरा लेट्स से 500 का, या फिर 450 लेट्स से ब्रोकरेज मान लेते हैं। दिस इज आवर जनरल डे, ठीक है। अब लेट्स से फिर एक्यूरेसी 50%, ठीक है, तो 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, तो 10 days यू विल बी इन लॉस, 10 days you will be in loss of minus 250, and here it is 450 is profit, okay, right? ये आपका एक्यूरेसी बैठेगा, still you will be in profit, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे इवन विथ 50% के प्रॉफिट। नाउ लेट्स कम विथ 60% का अगर ट्रेड होता है, which means that कि 12 days you are in profit, ठीक है, and remaining 8 days you are in loss। फिर भी क्या बन रहा है आपको, somewhere around 3400, let's say 70%, 70% में क्या हो जाएगा, you will be losing in 6 days, ठीक है, आप 6 दिन का लॉस होगा आपका, एंड प्रॉफिट विल बी फॉर 14 days। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 4800। तो समवेयर अगर whatever you know the strategy or whatever I'll be teaching you, that will be working at least 70% to 80%, ठीक है। Now 4800 में ब्रोकरेज मिलाकर भी if you are able to make even 30% in a month, it is still good, it's very good। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 10,000 से ट्रेड करके इतना कर सकते हैं, वैसी बड़ी बात नहीं है, बट लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड कैपिटल एंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बाद में कितना बनेगा, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार जो है कल दुनिया खत्म नहीं होगी ना, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड टुमारो इटसेल्फ। कल दुनिया खत्म तो हो नहीं रही है, वो 2012 में ही हो गई थी। इन 2012 ओनली द वर्ल्ड वाज ओवर, स्टिल वी आर हियर, राइट? सो market is going to be there tomorrow, day after tomorrow, तो think in longer term। आज का 1 महीने का गोल मत रखो, look for next 5 years 10 years goal, and market will reward you according to that, ठीक है। Now let's take a capital of 1 lakh, average capital, let's say I'm taking standard capital, okay। अब इस पे हम लोग 30% is return on a monthly basis we are looking for it, 30% monthly basis we are looking for return, okay, which will give me every month 30,000 rupees। अब यही चीज अगर आप if you'll do it for let's say next 10 years, this money will be बहुत ज्यादा हो जाएगा, but एक fact भी लेके चलते हैं, ठीक है, in next 5 years it can turn into this amount of money।
if not 30, if you are even taking 10% as well, ठीक है, it will be still a good amount of money. फिर भी 10 साल में ये 1,927 करोड़ बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जिसको काउंटिंग हो रही है वो कर लेना, ठीक है. सो बेसिकली इन सिंपलर वर्ड्स इट इज 927 करोड़ 9,06,882, ठीक है, विथ 10% मंथली. सो आप डिसाइड कर लो कि इनिशियली फॉर नेक्स्ट 1 year यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग. 1 lakh has only turned into 3 lakh. In next 2 years 1 lakh has turned into 9,84,000. आप जंप देखो, पहले एक साल में सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में आपको 8 लाख का प्रॉफिट, सॉरी दूसरे साल में 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. फर्स्ट ईयर यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2 lakh, नेक्स्ट सेकेंड ईयर यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 lakh, थर्ड ईयर you will be making a profit of 20 lakh, fourth year you will be making a profit of somewhere around 60 lakh. So year wise your profitability will be increasing. Now even to do this kind of compounding you should be able to give at least 6 months of time. 6 months of time, ये 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल है ही नहीं that you will be able to make even 10% in a month. ठीक है, अब देखो समझो इस चीज को, क्लियर है यहां तक सबको? whatever I have taught, is it clear for everyone? Perfect. और कितना टाइम चलेगा? जब अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं समझ, अमाउंट रिक्वायर्ड का मतलब है प्रतीक की उस स्टॉक को बाई करने के लिए कितने पैसे चाहिए. मैं तब से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, मेरी एनर्जी डाउन नहीं हो रही है, तुम्हें सुनने में डाउन हो रही है. अब देखो, अब साइकोलॉजिकल माइंडसेट की बातें करते हैं. बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारी? पहला है हमारा प्रॉब्लम, देखो हमने कवर कर लिया रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, लॉसेस ऑब्वियस सी बात है ग्रीड की वजह से होता है, ठीक है. देन वी कवर्ड अप क्वांटिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कंपाउंडिंग. देन हमने कवर किया है, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूं जो मुझे कवर करने थे. ओके, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट? कोई है इसका आंसर? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट्स? कुछ आंसर है? कल पनवेल जाना है किसी को? एनीवन वांट्स टू गो टू पनवेल टुमारो? जल्दी कर, पनवेल निकलना है. नो राइट? देन व्हाई? इट्स नॉट, it is human nature, but why don't you understand a very simple thing? Okay, show off, someone is saying show off to whom? To your girlfriend who doesn't exist, or to the social media world who don't even care what are you doing in your life, they're just jealous of you. किसको show off करना है यहाँ पे? when I ask my students to share their profit and loss, they don't even share it to me also कि भाई नहीं यार प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा. Whom do you want to show? Keep your profits private and losses also, at least not to me but to the world, right? So the thing is that why do we expect early profit? One reason is that our want, our need, we want something in our life. Right now here the class will go for another half an hour, okay, or maybe if it can go longer, that also depends. But yeah, till the time I want to speak and change your mindset, I'll continue. Till the time you want to attend, you can attend. till the आपकी मर्जी है, जब तक चाहिए आप अटेंड करो, नहीं तो छोड़ के जाना जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी है. आप समझो इस चीज को कि आप कभी भी, ठीक है, पूरा आपका पूरा आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते. यू कैनॉट बिकम रिच इन अ सिंगल डे. Everyone is talking about, like when the KGF was released, everyone was talking about Yash, that this guy is so good, he's changing, his movie is the biggest collection. Who was he before that? Did you know him? No, right? Bahubali. It took 5 years, right?
So why do we expect early things? Can you think? Akshay Kumar makes a film in 3 months. Which film has crossed 1,000 crore? Maybe or maybe not. I don't even know. Right? So the Eiffel Tower was not built in a single day, but Hiroshima and Nagasaki was destroyed in a single day. So your capital can be destroyed in a single day. आपका जो कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है एक दिन में, बट आपको अगर अच्छा करना है अपनी लाइफ में ना, तो वो एक दिन का काम नहीं है. अब जितना जल्दी समझ सकते हो उस चीज को समझ लेना. इवन टू नो एनीवन, आप समझो इस चीज को. यू मीट समवन, ठीक है, you meet someone, do you consider that person as your best friend right away? क्या आप कंसिडर कर लेते हो that person is your best friend, especially if you're in Thailand, let's say? Never. You will never consider that person. I'm not taking any kind of doubt. I can see that ki अरे यार 20 क्वांटिटी का रुशांग इंट्राडे में मेरे भाई लिवरेज मिलता है. यू गेट लिवरेज. 20% you have to pay for our stock. How many of you have not understood amount required का? मैं वापस ही एक्सप्लेन करके फिर से समझा देता हूं. ये 20 क्वांटिटी जो 4,000 रुपए लग रहे हैं, for one quantity I have to pay only 20% of the stock price. ये क्लियर है या नहीं? जिसने इंट्राडे का क्लास अटेंड किया उसको समझ में आ गया होगा. बाय द वे, if it is not clear, please open your Demat account and check out how much money it is required. You'll understand from there. Right? So you do not consider anyone whom you meet recently or just a day, you do not consider that person as the best friend unless she's not a girl. Okay, but she is not going to consider you as the best friend. You might think whatever you want to feel for her. Okay, if you're a guy, आप कहीं और आसमान में चले जाओगे, but yeah, that's what happens. So that's the reason I keep comparing the market with female, because I'm not being biased to anyone or like anything, but I'm trying to make you understand. So let's say that the market is a girl and you are a boy, okay, and you're trying to be like, you met her for the first time. You fell in love, obviously. That's the reality, right? Even if it is a market or if it is a girl, you fell in love with her as soon as you saw. Okay. Now you never know that whether she's a girl or angel Priya. It is as simple as that. So until unless you don't spend time with her, you won't really know that which kind of person is that. Okay, which kind of person is she? Whether she's good for you. If she is good, you need to give some time to leave about understanding, but at least to know that thing, right? So it takes time to understand the market. It takes time to know the things which is related to the market. टाइम लगता है मार्केट को समझने में, मार्केट से रिलेटेड चीजों को समझने में, स्ट्रैटेजी को जानने में, माइंडसेट को जानने में. सबने कोई ना कोई डिग्री तो की है ना. Like everyone have done some kind of graduation or maybe something like that. Or maybe you will be doing it. मैंने बीकॉम किया था. Average salary was 28,000. Still it is 28,000 maybe around. 3 साल पढ़ने के बाद मेरे को 28,000 का मिला. Why? I was happy with that. Let's say that you are cracking a job, you are getting a 30,000 rupees. You'll be happy with that. Why? मालूम है ना औकात क्या है हमारी बीकॉम के बाद. You know pretty well that what will you be getting it, right? So you don't expect any other thing, right? You will not be expecting, okay, you will not be expecting 1 lakh rupees or 2 lakh rupees if you have just done a BCom or from a normal college, and if you do not have any kind of extra skills. क्यों? वो एक स्टैंडर्ड है. तो मार्केट में क्यों सोचते हो? लोग बीकॉम करके 30,000 20,000 की सैलरी में खुश है. लोग मार्केट में आते हैं और 2 महीने बाद 3 महीने बाद सोचते हैं कि मैं दिन के 2,000 4,000 बनाऊंगा. Many people take market for granted, and you know that कि अगर आप for granted लोगे तो क्या होगा? मार्केट किसी के नहीं है ना.
Market doesn't know whether, let's say, Nitin has bought this stock or sold this stock. Market doesn't read your emotions. ये उंगली जो है ना, this, or with the help of your right finger, you click on the mouse or tap on your mobile screen to buy or sell. ठीक है? So this fingers are your either the creator or the destroyer. अगर आपने सही पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिट कर लिया, यू विल बी सेफ. अब try to understand these things. CA takes, I don't know the indefinite time to become a CA. Doctors at least 5 years, engineering 4 years, any kind of degree or profession takes years. And they get a doctor will take 5 years and they'll get around 60 to 90,000 rupees as a salary. A CA right now in Big Fours, they get hired for a 70 to 80,000 rupees salary after working hard for so many years. If you will give, अगर आप ये जो CA डॉक्टर जो भी ये सारी मेहनत करने के बाद इनको 60 से 90,000 के आसपास की सैलरी मिलती है आज के डेट में, बिकॉज आई नो कि आइडिया है मुझे कितना मिलता है करके. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज. कोई कोई होते हैं जिनको मिलता है ज्यादा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज. ओके, दिस इज व्हाट इट गेट्स, राइट. तो आप इन चीजों को समझो कि अगर ये लोग इतना टाइम लेके कर रहे हैं तो अपन ट्रेडिंग करने हैं तो हम लोग इतना जल्दी प्रॉफिट क्यों सोचते हैं? आए मार्केट के आपका इंतजार कर रहा था. आप लड़के वाले हो, लड़की को देखने गए हो कि जैसे ही आएंगे और आपकी स्वागत में लग जाएंगे. In fact, the fact is that कि it is actually like that. I'll tell you very. So let's you relate this. Okay, आप relate करोगे. लड़की वाले आपने देखा होगा ना कि लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर, बहुत इज्जत मिलती है. Okay, when the girl side, basically the boy side goes to a girl's place to see the girl, basically they get a lot of respect. When you enter into the market, you also get a lot of respect. वहां पे भी आपको स्वागत करते हैं प्रॉफिट से. They will be showing you all the dreams. This is the world. Get into it. You will get good profits. Now there, once you get the married, you realize what you have done it. Now here, once you get completely into it, जब शादी कर लेते हो तब आपको मालूम पड़ता है क्या चीजें होती है. एंड यहाँ पे भी मार्केट में भी आपका स्वागत तो प्रॉफिट से बिना सीखे हुए घुस गए, अब बिना समझे हुए करते जा रहे हो और थोड़े दिनों में आपको मालूम पड़ेगा. हुआ है किसी के साथ ऐसा? स्वागत तो बहुत अच्छा हुआ, फिर उसके बाद जो पिटाई हुई है जिंदगी भर याद रखेंगे. हुआ ऐसा? प्रॉफिट हुआ पहला दिन 100, 200, 1000, 2000. आफ्टर दैट लॉस, राइट. So this is how stock market welcomes everyone, and this is आप सबने, like anyone in this whole world, if he knows even that ki what is, if it is going down or up, if he's trading, he will make profit at least for 2-3 days. वो भी गैम्बलर भी पैसा बना लेता है भाई मार्केट से, बट उसको मालूम नहीं है ना कि मार्केट कैसे काम करता है. मेरे टी शर्ट पे एक्चुअली लिखा हुआ है, इफ यू कैन रीड, फास्ट नेवर लास्ट. ठीक है. सो इफ यू ट्राइंग टू रन फास्ट, यू विल नेवर विन. सो try to go slow if possible. If not, you will leave the market very fast. ठीक है. धीरे जाने की कोशिश करो, अदरवाइज मार्केट बहुत ही जल्दी आपको फेंक देगा बाहर, इतना जान लो. ठीक है. अब देखो, हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे ना कि लेट्स से दैट इफ यू आर डिसाइडिंग you want certain amount of losses for the day. If you have, like I always tell myself कि मेरा losses fixed है. तो मैं आपको आज बता रहा था कि मैं दिखाने वाला था ना. Okay, I'll tell you. 1 minute. So I was trading along with my students, जो भी advanced classes में है. Okay, 1 minute.
तो इफ यू गाइज रिमेंबर दोज हु आर इन पीटीएम, कितना प्रॉफिट था उस टाइम? 2000 या 3000 के आसपास प्रॉफिट था ना, इफ यू कैन रिकॉल पीटीएम स्टूडेंट्स. माइन वाज then I ended up in loss of 4400. At one point of time it was in 21,000 profit. ठीक है, एक टाइम पे ये 21,000 का प्रॉफिट था. लास्ट ट्रेड मैंने लिया था 1 o'clock, उसके बाद मैंने बंद कर दिया. मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी थी ना बाद में. बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे 1 o'clock के बाद, दोज हु नो अबाउट इट, ठीक है, 1 o'clock के बाद जो हमने, आप देखोगे मार्केट को, ठीक है, इधर दिस वन आफ्टर 1 o'clock went up, came down, again went up. Nifty में it was also having a better move. ठीक है, after 1 o'clock, see, as soon as I had exited the market, अगला ही कैंडल कहाँ गया था? I was expecting market to come down, नहीं आ रहा था. Market went up. हो सकता था कि मैं अगर होल्ड करता तो मेरा ज्यादा लॉस हो सकता था. उसके बाद I did not trade for the whole day. ठीक है, मैंने फिर ट्रेडिंग नहीं की. स्टार्टिंग में ट्रेड लिया, प्रॉफिट्स हुए, फिर अच्छे प्रॉफिट्स हुए. Again also I faced losses. So I ended up with 4,400, which is approximately maybe around 1.5 or 2% of the cap. खत्म कर दिया, मन नहीं किया ट्रेड करने का. So always remember that कि you don't need to fight with the market. You have to accept. At one point of time I was having 20,000 profit. मेरा था 20,000 का प्रॉफिट, मस्त चल रहा था मेरे. मैं टारगेट का वेट कर रहा था, नहीं आ रहा था. और 2-3 बार it was like from 20,000 it went to 10,000, from again it came to 20,000. बार बार मूवमेंट कर रहा था इस तरीके से. तो मैं निकल गया एक टाइम के लिए. देन आई एंटर वंस अगेन, वो मेरे को लॉस दिया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, थोड़ा लॉस हुआ, फिर उसके बाद आई गॉट आउट. तो आई हैव डिसाइडेड अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई ठीक है, वंस इफ आई एम हैव गॉन इनटू द प्रॉफिट, मैं कोशिश करूंगा मैं लॉस में ना निकलूं. अगर लॉस होता भी है तो छोटा लॉस हो, अदरवाइज माय बेस्ट इज ऑलवेज कि मैं लॉस में ना निकलूं. अगर मैंने एक बार प्रॉफिट में घुस गया हूं मैं, एज इन की 1%, 2%, आई हैव, मैंने मिल गया मेरे को, उसके बाद चाहे जो हो जाए, मैं लॉस में आई विल नेवर बी टेकिंग अप द लॉसेस. आउट ऑफ 10 टाइम्स एटलीस्ट 2 टाइम्स, चलो मान लिया हो गया, गलती हो गया, 8 टाइम्स आई विल ट्राई टू बी अ प्रॉफिटेबल. तो अगर आप माइंडसेट इस तरीके से रखोगे कि मेरे को यहाँ पे हर दिन करना है, अगर इफ इमेजिन इफ आई वुड हैव ट्रेडेड, मैं अगर इस ट्रेड को होल्ड करता, क्या होता? लुक एट द क्वांटिटी आई वाज हैविंग इट. 1200 क्वांटिटी था, 1200 वाज द क्वांटिटी, द प्राइस इज 102, 36,000 लॉस, somewhere around 40,000 close to loss होता. Which one is better, this one or 40,000? This 1.5% loss is better or 15%? Tell me. उम्मीद करोगे तो क्या होगा? अननेसेसरी उम्मीद भी करना बेकार होता है. Now imagine if I would have taken this loss of 40,000. Regret होता या नहीं होता? Would I have been regretting that कि my decision of holding it or not? Regret होता, बहुत ज्यादा होता. Right? तो आप लाइफ में, there are many instances in your life that कि where things were not in your control. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे. And let's say take an example of relationship. Many of you would have gone through a breakup, or maybe let's say exams के time पे you regret a lot. यार पढ़ लेते, right? वहां पे regret चलेगा, कर लो. But in market there is no point of regretting. यहाँ पे regret करके करोगे क्या? लॉस तो हो गया, कांड तो हो गए हैं. What will you do? It's better to take a decision rather than regretting it later on. डिसीजन लो एग्जिट करने का छोटे लॉस पे, इससे बेटर यही है ना कि आप बड़े लॉस लेकर रिग्रेट करो, अरे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए. अरे क्या करना चाहिए था, वो कर चुके हो आप. यू हैव ऑलरेडी डन ऑल दोज स्टफ. देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग लेटर ऑन. जब कभी कभी ऐसा होता है, डू अग्री दैट कि देयर आर टाइम्स दैट कि बिकॉज ऑफ सम सिली रीजन, सम सिली मिस्टेक्स, 5%, 10%, कभी कभी 15-20% भी लॉसेस हो जाते हैं.
आपकी गलती कुछ भी नहीं थी. Often it would have happened that even it was not your mistake, you would have lost around huge amount of money, 15 to 20%. Not your mistake means there is a fast movement, you did not get a chance to exit at small loss. That's a part and which you have to accept it. But this one is you can accept, आप इसको accept कर सकते हो. But the other thing जहां पे आपके control में था, still you did not control the losses. ठीक है. आप अपने आप से पूछो that कि what do you want? Do you want to learn this skill and earn slowly, or without learning you, or even after learning you want this, you want to go very fast? क्या चाहिए आपको? Just because other person is making profit, it doesn't mean that even you can make it right away or from tomorrow. आप बोलते होगे ना, your mom and dad would have done some kind of comparison. आपके मम्मी पापा ने कभी ना कभी तो कंपैरिजन किया होगा ना आपका, मे बी आपके कजन से नफरत होती थी. देन यहाँ पे क्यों कंपैरिजन होती है? दैट कि व्हाई डू वी कंपेयर आवरसेल्फ टू समवन एल्स प्रॉफिट? कोई पॉइंट नहीं है कंपैरिजन का. बट स्टिल मेनी पीपल थिंक दैट कि बैक ऑफ द माइंड में आ जाता है. ठीक है. पहली चीज हमेशा याद रखोगे ट्रेडिंग में ना, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, बिलीव इन योर ट्रेड एंड द एनालिसिस. बिकॉज बिलीव ही एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी. इफ यू डू नॉट बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ विल यू मेक अदर्स बिलीव इन यू? मेनी पीपल से दैट कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, स्टॉक मार्केट बोलते हैं ये अच्छी चीज नहीं है, पैसे डूब जाते हैं बहुत लोगों के. पेरेंट्स बोलते हैं सही है, क्योंकि जो देखेंगे तो वही होगा ना. उनको ये भी तो बोल देना फिर, यूपीएससी में भी 100 में से 99 लोगों का ही सिलेक्शन होता है. टेल देम व्हाई डू यू वांट मी टू डू द यूपीएससी? क्यों लगता है कि मैं यूपीएससी कर लूंगा? Just tell your parents if you really want to do it, not for the money, but for your own dreams, for learning, for taking right trades. Just tell them this कि यूपीएससी में भी 10 लाख लोग देते हैं पेपर और सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा? यहां पे कम से कम चीजें मेरे हाथ में है. In stock market, you are the boss and you are the employee. आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, you want to be a good trader, you want to be a successful trader, or you want to become like you want to leave the market. It's completely up to you. आपके ऊपर होती है. अगर आपके मम्मी पापा अगर इन्हें के साथ बोल सकते हो, शायद मान जाए या समझ जाए. आप अगर चांस मांगना चाहते हो अपने मॉम डैड से, बोलना इतना ही, ठीक है मैं आपके जो भी. हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग टू स्टॉक मार्केट? कितने लोग के पेरेंट्स अग्री नहीं करते हैं? Many. राइट. जस्ट टेल देम दिस कि यूपीएससी में भी तो इतना ही, उसमें तो 99% लोग फेल होते हैं, बट फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? एक रेस होता है ना, उसमें तो एक ही बंदा जीतता है. आईपीएल टीम होती है, आईपीएल सब लोग देख रहे हो ना, ओनली वन टीम विंस एवरी ईयर, बट स्टिल व्हाई देयर आर 10 टीम्स प्लेइंग? क्यों खेल रहे हैं? इनफैक्ट दे आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर. यहां तो आपका कॉम्पिटिशन आपके खुद से है. यू आर कॉम्पिटिंग विथ योरसेल्फ, राइट? So whether you want to become a trader or not, it's completely going to be your decision. ठीक है. तो आप अपने आप से हमेशा पूछो कि अगर मैं सीखना चाहता हूं तो, if anyone is making money, let's say here we have, there is a student of mine who is with me from last 2 years mostly. ठीक है. is still not a profitable trader. वो अभी भी profitable trader नहीं है, 2 साल हो गया है. ठीक है. एंड अभी भी ही इज स्टिल नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एंड उसने मेरे को कल कॉल किया, बोला कि ये क्या मतलब सही है क्या कि 2 साल हो गए मेरे को कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ? बोला दैट्स कंप्लीटली फाइन. कम से कम वो लॉस में नहीं है. इज लाइक मिनिमल लॉसेस. He over the period of time he had learned a lot of things. Some people who is a profitable trader after 2-3 months or maybe 6 months,
तो it takes time for someone and it becomes early. But always remember कि अगर जल्दी में कुछ भी चीजें हो रही हैं आपके साथ, so that is also a problem. यहाँ पे कोई भी बंदा मेरे को बोल दे कि भाई मैंने 2 महीने सीखा कहीं से और उसके बाद मैंने मस्त अगले दिन से 2000-4000 रुपए प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर, पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो बंदा आपको 1 महीने के बाद दिखेगा नहीं। You will not be able to see that person after 1 or 2 months. That if someone is telling you that he's making good amount of profit, like 3,000-4,000 rupees right after the learning. There is a very simple thing which you have to understand in the stock market, which is stepwise profit. जो मैंने आपको already शायद बताया हुआ है. I've told you right कि कौन से टाइम पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन से मंथ आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हियर. I've already told right. Okay. In case I have not told you, तो मैंने बता चुका हूं जहां तक मुझे याद है. ठीक है, तो याद रखना. अप्रैल में क्लास खत्म होगा, मई जून यू आर एन इंटर्न. क्या हो? इंटर्न हो मार्केट, जहां पे आप लेस देन 500 बनाओगे, 500 और लेस देन दैट. मे बी वंस यू स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे आप सीख रहे हो मार्केट विथ स्मॉलर कैपिटल, 100 रुपया 10-20 रुपया प्रॉफिट बनेंगे. ठीक है. Then after June, July, let's say July, August, September, we'll start making around 100 to 1,000 rupees, maybe around, or maybe it can go up to capitals के ऊपर depend करता है. But yeah, 1,000 to 2,000 rupees you will make around. Then October, November, if you will, your capital also matters. अगर आपने capital के साथ साथ increase कर रहे हो, कब करना है मैं बताता जाऊंगा वैसे. Let's say you're making October, November में 2,000 से 5,000 rupees अब बनाओगे. ठीक है. Then December तक consider कर लो. Then from next year, maybe from Jan, Feb, you'll start making around 5,000 to 10,000 rupees a day after 1 year. अब बता दो, 1 साल टाइम, 5,000 बनाने के लिए कम से कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 1 लाख. है 1 साल का टाइम, दे सकते हो आप? दो 1 साल का टाइम, 1 year टाइम टू दिस मार्केट. ठीक है, डेडिकेटेड टाइम, 1 लाख कैपिटल आफ्टर 1 year. ठीक है. कैपिटल तो चलो आप बोलो ये कैपिटल कहां से लगे, देखो भाई 12 महीने पार्ट टाइम जॉब, इवन 10,000 इज द सैलरी, 1,20,000 इज द अर्निंग. ठीक है, करना है कर सकते हैं. मैं बता रहा हूं. और दिन के 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस, लाइक लाइव मार्केट में. आफ्टर दैट 1 hour मार्केट के बाद क्लास अटेंड करना पड़ेगा. you'll make minimum 50,000 rupees profit. ठीक है, minimum 50,000 rupees profit, like continuously after 1 year of practicing it. 1 साल प्रैक्टिस. और ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शंस की बात ही नहीं करो. ऑप्शंस जाओगे बर्बाद हो जाओगे. ठीक है, ये 1 लाख भी चला जाएगा. ठीक है, ऑप्शंस धीरे धीरे जब आना होगा आ जाओगे. And after 2 years, this profit will be maybe monthly. It can go up to 1 lakh or more than that. 2 साल के बाद. और 3 साल के बाद मे बी अराउंड 5 लाख रुपीज एवरी मंथ. बट ये भी आप डिसाइड करो. दिस वन ऑल्सो, इवन इफ यू वांट टू मेक 5 लाख रुपीज एवरी मंथ. ठीक है, 5 लाख रुपए 3 साल में कोई जॉब नहीं देने वाला है. यू आर नॉट, none of, like in this whole world, not even any job can offer you 5 lakh rupees a month after 3 years. But stock market can give. But it has its own some criteria, and वो criteria जो है वो आप ही के पास है. आप कितना पैसा बना सकते हो, how much money you can make and how much money you can lose is all up to you. और जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि let's say whom you love, everyone loves MS Dhoni, right? If in a case you don't, I hate you already. Okay, so in case so if you can recall his first match, he was like 0 पे out हुआ था ना. He got out on duck, right? Now he is the most successful captain who has all the 3 ICC trophies. How many years? People love him so much, even for the practice match, the stadium will be full.
Why Dinesh Karthik? He didn't come in that picture. The way he kept himself, the way he practiced, the hard work he had, everything. It took him a lot. It took, I guess, whenever he got debut, maybe around 2003 or 4 somewhere, or maybe जब भी बना debut किया था उन्होंने, ठीक है? Now he wasn't a captain right after that. He was a captain in 2008. So even any cricketer who comes into the Indian cricket team, they do not become a captain of the team immediately, right? वो तुरंत नहीं बनता है. It takes time. Similarly, over here also, it will definitely take some time for you to become a good trader. So do not expect early results. इतना जान लेना, ठीक है? तो समझ लो कि ऐसा है, मार्केट दे सकता है, बस आपको समझना है कि कितना चाहिए. If you are in hurry, market will take your all your money. अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मार्केट सारी चीजें आपकी लेके चला जाएगा, ठीक है? बहुत बार ऐसा भी लगेगा ना, ठीक है? I'll tell you one thing. Everyone will remember one thing, that when you were a kid, you wanted something, maybe some toy or something. आपको कुछ ना कुछ बचपन में चाहिए होगा और आपने जिद करके वो ले लिया होगा, ठीक है? You are very happy. Similarly, in the stock market also, if you want to become a good trader, you need to be stubborn in the process, not in your trades. Remember, you are taking a buy trade, market is going down, you are stubborn कि ना ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा. That stubborn I'm not talking. I'm talking about the process. Okay, that there are a lot of difficulties coming, but still you are not giving up. That is something. Okay, remember, you should not be having any option of giving up. Okay, this should not be any kind of plan B for those who want to become a trader. Take up a chance. I'm not telling that everyone who have attended or who are here right now will be becoming a full-time trader. But I'll suggest, tell you one thing is that try out. This can be a side hustle initially. Later on, maybe down the lane, 5 years, you will become a full-time trader. You never know. I'm not telling you to leave your job. Some people ask me that should I leave my job? Should I leave my studies and become a trader? Kyun bhai? You don't need to leave your job. Job is giving you fixed income. Because of job, you're dreaming for a stock market journey. So you should leave your job only when you are making more money than what you are getting in your job. आप पढ़ाई छोड़ने की बात करते हैं लोग. Even for the purpose startups का भी आप देखते हो ना, Oyo founder has left, was not even 10th or 12th pass out. अरे भाई किस्मत थी, बन गया. There are many startup founders who have lost huge amount of money. Talking about the most successful startup, the recent bank collapsed, right? Not Denzo, Rapido, not Rapido, yaar, which was Bounce, a company in Bangalore, collapsed, right? तो आप एक के पास knowledge होना चाहिए. You should be having. I will not really agree with this point कि if someone is telling you that you should not be studying, you should study, you should be going to college, because आप जान लो, एक चीज समझ लो कि कॉलेज की जिंदगी जो होगी ना, that will be the best part of your life. You will never get back that life. मेरी 3 साल की जिंदगी थी. I still feel like यार एक बार कॉलेज जाने का मन करता है. अब नहीं हो पाएगा. निकल गई जिंदगी मेरी वो कि where I can go to college or even I can do MBA. That life is gone. If you're still going through that, and if you maybe the life is going to come, enjoy your life. But by the time and in between, or basically side by side, you can struggle, you can hard work, you can hustle for your dreams, but do not spoil your college life by thinking something, because you'll get the best of the people when you are in college. If I am here
because of my friends who also supported me when I needed money. Okay, so if I would not have been gone to college, maybe I would not have got that money, right? Not just money, but the support, the emotional support the you need in your life, that is pretty much important. Okay, so yeah, that's what I can say. That it is important for each and everyone to learn stock market. It's not necessary that you will become a good trader, but definitely you will learn enough that you can make a good financial decision. Trading is tough. That's the reason it is called that. Trading is the most stressed job to make easiest money. Any day, if I'm trading, I can make 1 lakh rupees a day. If I'm having 10 lakh capital or 5 lakh capital, I can make it up. But to reach at this point of time, to think also that I can make 1 lakh rupees, it took more than 5 to 6 years to realize this. But still, for me, even if I'm losing like any amount of money, that will also matter for me. If I'm losing, let's say 1,000 or 10,000 or 20,000 rupees, I always think whenever I lose more than 30,000 it is my 1 month salary. How am I losing this? Why did I take a wrong trade? If I'm taking a wrong trade and if I'm losing it, if it is a right trade, then if it is fine. But if I'm doing something wrong and if I'm losing money, I will always feel yeah, this is a 1 month salary and how can I just compare myself to the past to what I was doing like few years back. I was happy with this and now it's the 1 month hard work income which I've lost. So at one period of time, you will also realize that before the big profits, you'll be having big losses. Basically, before making 1,000 rupees, 1,000 रुपए बनाने से पहले आपको 1,000 का लॉस होगा, 10,000 बनाने से पहले 10,000 का लॉस होगा. ये स्टॉक मार्केट में हर किसी के साथ होता है. ठीक है. मार्केट देता बहुत अच्छा देता है, पैसा देता है. जब लेता है तो कपड़े तक लेके चला जाएगा. ठीक है, इतना याद रखना. और फिर उसके बाद जो हाल होगा, मार्केट से कभी भी पंगा मत लेना. ठीक है, डू नॉट mess with the market. Basically, do not go against with the market. In the same way, you should not be going against your wife, or if in a case girlfriend, chalo wo to hai nahi, but if you're married, you don't dare to go against your wife. So even here also, try to be a good husband and try to follow the market. Do not go against it. You'll be happy in your personal life as well as in your stock market life. All clear for the day? Before I exit, I just want to tell you that my life's turning point was just one thing. Okay, one thought. I have the time. I am at that stage where I can take this decision. मैं ऐसे point of time पे हूँ जहाँ पे मैं ये decision ले सकता हूँ कि मुझे करना है या नहीं. Maximum क्या होगा कि मैं हार जाऊंगा. The worst which can happen to me is that I will not be able to make a career in the stock market. I might not become a good trader. The last option. But if I will not try this, I'll regret for my whole life. मैं हार गया. I can go back to a job. मैं job कर लूंगा वापस से. कोशिश तो करूंगा. कोशिश when I did this, when I wanted to become a full-time trader, when I had quit my job. मैंने बस यही सोचा यार, I give almost 3 hours in traveling, 10 hours in office. What do I have? 30,000 at the end of the month. I'm not someone who will be satisfied with this. I need to work hard. If not stock market, then something else. मैं अभी शायद कैट का प्रिपरेशन या फिर आईएम में होता, बट मेरे को करना था. ये मेरी जिद थी. ठीक है, कि जिद एज इन की आई वांटेड टू डू समथिंग गुड इन माय लाइफ, एज एवरीवन ऑब्वियसली सबको भी यही चाहिए. ठीक है, तो माय लाइफ टर्निंग पॉइंट वाज कि लेट्स गिव अ ट्राई, and this will be the last option which I'm giving it to myself. If I'm successful in this, I'll continue. If I'm not, I'll go back to the job. When I left my job, I was 22 or 22 or 21 maybe. Okay, in 2020 I had left my job. Okay, now
It's been more than 3 years now. Till the time, or like whenever I meet my seniors, those who are managers and even directors, this they will always tell me ki you have taken a right decision to like you're doing right in your life because you're following your dreams. आप तुम अपने dreams को follow कर रहे हैं, that's the best thing. Even they were so supportive. My director, जो मेरे टीम का जो डायरेक्टर था ना, he used to tell me like when I was like having a farewell, उसने मेरे को बोला था कि make some YouTube videos and make some good great thumbnail and all these because even he was trading in the stock market. Okay, तो वो भी trading कर रहा था, मेरे को मालूम पड़ा था. Okay, so yeah, so the support is required. Like mental support is pretty much important if you want to become a trader. आप कभी भी कोई अच्छा ट्रेड नहीं ले पाओगे if you're having a wrong mindset. ठीक है, तो ट्रेडिंग इज ऑलवेज डन व्हेन यू आर हैप्पी. कोई भी आप भले ही अपनी जॉब बड़े दुखी मन से करते हो, बट ट्रेडिंग कभी भी दुखी मन से मत करना यार. बोझ नहीं है ये. दिस इज नॉट अ बर्डन. ट्रेडिंग इज नॉट अ बर्डन. ट्रेडिंग इज अ हैप्पीनेस. ओके, ट्रेडिंग इज not a burden. It can be boring for me because we know ki as a trader we know that well aware ki if I'm going for this trade maximum I'll lose 1000, maximum I'll gain 2000. Well aware of the fact. I'll accept it both the things, right? कोशिश करो. रिमेंबर कि याद रखना कि क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, you are the one who will decide whether you want to be a creator of your trading journey or destroyer. That will be your decision and nobody can take this decision from you. Okay, so let me know in the chat box. First question, what do you want to become? Trader, sorry, what do, 1 minute. What do you want to become? Creator of your trading journey or destroyer? Because everything, both the decision is in your hand. You want to become a creator. So at least follow what I have taught you today. Do not go against the market. Creator of my family. Very creator of my family. For that, you have to get married. Good one. You should be like caretaker of my family. Short selling can be same rules. So yes, businessman. That's a good thing. Okay, and this class was for almost like 2 hours, and still like there are many things which I have not yet covered. Maybe I'll be covering it up later on. It's all maybe in classes at the end of the session I'll be talking about. Just let me know how was today's session. कैसा लगा आपको आज का सेशन इन सिंगल वर्ड और जस्ट टेल मी. अब मैं पढ़ता जाऊं या नहीं पढ़ो अभी ये सोच रहा हूं मैं. मजा आया सबको? सबको मैंने रिक्वेस्ट करके बोला था अटेंड करने. थैंक यू ईच एंड एवरीवन दोज हु जॉइंड द सेशन. ठीक है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड सीन so many people joining the classes after the payment, to be precise. Best examples. Worth joining the Smat course? Worth joining the Smat course? यहाँ वर्थ वर्थ बोल रहे हो, जब लॉस होगा तो बोले ये कुछ पढ़ाया उड़ाया नहीं, लॉसेस हो रहे. होता है. प्रॉफिट बनाओगे तो ऑल थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम मेकिंग प्रॉफिट. लॉसेस हो गए खुद की वजह से, लॉसेस ही होंगे खुद की वजह से, प्रॉफिट भी होंगे. रिमेंबर दैट. You will be making profit and losses just because of yourself only. But for the courtesy, you will be telling me thank you for all the support because I was the one who taught you. Okay. Losses where you will be blaming me because you will be frustrated. ठीक है. But याद रखना कि जो भी rules आपको बताया, jokes apart, whatever I have told you for the risk management, if you'll follow all those things, trust me, nothing will stop you. There will be bad days. Remember one more thing is that capital wiping out is common.
once, twice, thrice, 4 times, 5 times, you'll be wiping out the capital. But understand one thing कि ये genuine reasons होना चाहिए. It should be because of the genuine reason, not because of your revenge trading. Give yourself a chance, and chance should be in a way that ki you really want to do well. I know that ki after some time we will not be having classes and all. Okay, but yeah, do not give up on this, because there was a reason you had started it, and you should continue for that. And we'll meet tomorrow for our regular class, 7:30 English, 8:45 Hindi batch. I will not be taking up the doubts over here. Okay, मैं कोई भी डाउट से अभी नहीं लूंगा मैं, ठीक है. थक गया हूँ अब मैं, एक्चुअली 2 घंटे हो गए. So just bye, good night, take care. Whatever the doubts you are having it, you can text me on WhatsApp. That's all from my end, guys. Bye, good night, take care, and see you. I hope it was worth it. बस गुड नाइट बोल दो, बाय बोल दो, क्वेश्चन मत पूछो. बस अब क्वेश्चन मत पूछो, आप टेक्स्ट कर लो. अब मैं टेक्स्ट पे बता दूंगा. हो गया आज के लिए. चलो, सीख लो मार्केट, तो गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी अगर नहीं है तो. और सीख लिए मार्केट, पैसे कमाओगे, वाइफ को दोगे कुछ खरीद के, या मॉम डैड को देगे कुछ खरीद के, तो वहां पे भी वो लोग भी खुश हो जाएंगे. ठीक है, या फिर मंदिर जाकर, या फिर जहां पे भी आप जाकर दान करोगे, डोनेशन करोगे, तो वहां पे भी खुश हो जाएंगे लोग. सब जानना है इसको. मेरी है नहीं है. चलो भाई, एंड करता हूं मैं अब.